A huge round of applause for him once again. Requesting architect Bobby to offer a floral welcome to him. In fact, this beautiful bouquet is crafted by origami that's spearheaded by architect Bobby and his team. Come on, ladies and gentlemen, give it up for them, please. Over to you, Mr. Hello. Am I audible? आवाज आ रही है? हवा आ रही है? कभी कभी नहीं भी आनी चाहिए. Okay. Thank you so much for taking time, sitting here and coming here to listen to this thing. किसी को स्किल इंडिया के बारे में पता है? किसी को नहीं पता है? किसी को स्किल्स की जरूरत है अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए? यहाँ से आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर खुद साइड पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको ना कारपेंटर से काम कराना प्रॉपर्ली हो पाता है, ना मैसन से काम कराना प्रॉपर्ली हो पाता है. वो बोलते हैं कुछ नहीं आता है, हमको खड़े नहीं कराना पड़ेगा. Now imagine a world in which architect can spend or interior designer can spend their good quality time on designing the project, and you have qualified doctors, like you have qualified lawyers, people like that who can run, execute what you have designed and what you have constructed, right? Wouldn't that be better? वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तो ऐसे ही कोई मिशन को लेते हुए गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था, जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज, जो सब सेक्टर्स, जहाँ पर बहुत इनफॉर्मल लेवल पे लोग काम करते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार किया जा सके. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू सर्टेन पेन पॉइंट्स एंड सर्टेन एरियाज जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी के अंदर में, आपको एक स्टार्टिंग आर्किटेक्ट से ऊपर ले जाने के ऊपर में, या इंटीरियर डिजाइनर से ऊपर ले जाने के ऊपर में, या आपकी फर्म को ग्रो करने के लिए things that you will need and why you need to collaborate and work on this thing together. All right? Okay. So I guess we all know that we have an opportunity in hand. हमारे पास में बहुत, अभी जब से कोविड लगा उसके बाद में चाइना +1, चाइना सब्स्टिट्यूट, चाइना भगाओ, चाइना हटाओ, एंड लॉट ऑफ डिमांड हैज इंक्रीज्ड. लोग घर में इतना रहे कि उनको लगा हमारा घर ही अच्छा नहीं है, हमको घर को पहले बेटर करना चाहिए. आई एम श्योर सबका काम बढ़ा होगा, राइट? अगर काम बढ़ा तो काम बढ़ने के साथ साथ में मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी देख रहा हूँ मैं कि आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स भी वर्कशॉप खोल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, लेकिन चलाने के लिए लोग नहीं है. गलत बोल रहा हूँ तो कोई हाथ खड़ा करके बोलना, सही बोल रहा हूँ तो हाथ ताली के लिए बजा सकते हो. ओके फाइन. सो अपॉर्चुनिटी इज देयर. इंडिया इज द नेक्स्ट 25 years probably belong to just India if we take the opportunity in the right way and we do the right thing about it. The numbers on the screen showcase that how we are heavily dependent on imports and how export is what is driving China and even country like Vietnam, जो केवल 10-12 सालों के अंदर में ऊपर उठ के आई है. तो इमेजिन करिए हमारे पास में कितना स्कोप है आगे बढ़ने का. But at the same time, another challenge that we face is कि हम जितनी बड़ी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जितने बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पर सब जगह स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत दबदबा है. वहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम बना हुआ है. और अगर हम नंबर्स देखेंगे तो कोरिया, जापान के अंदर में ये नंबर 80-85% से भी ऊपर जा रहा है, और इंडिया के अंदर में ये नंबर 2.5% है. क्या इसका मतलब है हमारे यहाँ स्किल्स नहीं है या सिस्टम नहीं है? ऐसा नहीं है. हमारे स्किल्स है, लेकिन हमारे फॉर्मल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस नहीं है. आज भी आप देखोगे हर एक सिटी के अंदर में अपना एक मॉम एंड पॉप स्टोर खोल के कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइन बना रहा है. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग ट्रबल, क्योंकि कोई बच्चा 1 महीने का ऑटोकैड के कोर्स करके आता है और बोलता है साहब मैं इंटीरियर डिजाइनर है, राइट? सबने प्रॉब्लम फेस किया होगा. तो व्हाट डू वी डू अबाउट इट? वी नीड ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फॉर दैट. जैसे डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत है, लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत है, उसी तरह से इंटीरियर डिजाइन और बाकी भी हमारे जितने जॉब रोल्स हैं उसके लिए भी हमारे को स्टैंडर्ड्स की जरूरत है. But there are certain challenges that we face in our country. जो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, डिजाइन एंड बिल्ड का गैप है, कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, और हम लोग एक्चुअली में इंडस्ट्री में क्या करते हैं. तो those challenges are there.
So how do we solve it? I would like to show you something which will probably open your eyes about what is the power of skills and what is the world doing. जब हम इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे जाने की बात करें तो वर्ल्ड कर क्या है वो देखना जरूरी है. Can I have the audio sound please? भाई साहब YouTube वीडियो से अच्छा ये वाला वीडियो है. साउंड लगाओ. साउंड आवाज. अरे मेरा नहीं वीडियो का साउंड बाबा. One of you is a champion. Savor every moment. And of course, enjoy yourselves. Please welcome India! Стандарту WorldSkills объявляю открытым. Of WorldSkills Design. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. आप लोगों में से कितने लोगों को वर्ल्ड सीरीज के बारे में पता था? जो बैंक 1%, 2 परसेंट. आप में से कितने लोगों ने इसमें किस किस तरह की स्किल्स आइडेंटिफाई करी? कोई हाथ रेस करके बताना चाहेगा? एनीवन? क्या क्या देखा आपने? एनीवन? और कुछ नहीं? ज्वेलरी डिजाइनिंग? Water technology. Yes, yes. Graphic designing, yes. Can you have a mic, please? Okay. Okay. So there were about more than 40 different types of skills that were highlighted there.
इन 40 डिफरेंट स्किल्स पे जिस तरह से ओलंपिक्स होता है स्पोर्ट्स के लिए, ये स्किल्स का ओलंपिक्स है. You saw the how big the opening ceremony was, how big the closing ceremony was. क्या हम इंस्पायर करेंगे कि हम हमारे बच्चों को या हमारे किचन किंग्स को या हमारे कंट्री के लोगों को वहाँ तक पहुँचा सके? हमें अगर पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ पर पहुँचा पाएंगे? Now imagine something like that for our sector is also available, but we are not aware about it. आज कोहली क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तानिया नेहवाल बैडमिंटन में कर रही है, हमारी फील्ड में भी बच्चे एस्पायर करके यहाँ तक जा सकते हैं, हमें नहीं पता है. एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई बाकी कंट्रीज जो आगे है वो क्यों आगे हैं, क्योंकि वहाँ पर बचपन से ही हर जॉब रोल के ऊपर में स्पेसिफिकली अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि कहाँ पर काम कैसे होता है, ये काम मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं, काम क्या है वो समझते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है. दैट्स द रीजन व्हाई वहाँ पर एक कारपेंटर अर्न्स मोर देन अ डॉक्टर, और यहाँ पर हम लोग भले वो कारपेंटर में ढंग से काम नहीं किया था, वो हम चक्कर काटते जाते हैं. Now let's look at it from the world, from the lens of world skills competition. We are lacking. अगर हम उसको compare करें, why are we lacking? We are lacking because we don't have understanding about national occupation standard. अगर हम आज भी बात करते हैं कि अगर हमने कोई बच्चा इंटीरियर डिजाइन करके आया है, तो कौन सा तरह का इंटीरियर डिजाइन कर सकता है? क्या वो रेसिडेंशियल में एक्सपर्ट है, हॉस्पिटैलिटी में एक्सपर्ट है? आज भी कॉलेजेस वो चीज के ऊपर फोकस नहीं करते. आज भी हम ट्रेड्स को प्रॉपर्टी नाम से नहीं बुला पाते. The kind of infrastructure that is required. हर इंडियन डिजाइन कॉलेज के अंदर में, इंस्टीट्यूट के अंदर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है, बट डू वी हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू वो रियल वर्ल्ड में जब जा रहा है? ये प्रॉब्लम हम बार बार बोलते हैं कि उसे कॉलेज में तो सीख लिया, बट यहाँ पर हमारे लिए काम का नहीं है, अभी तो 2 साल और लगेगा. कैन वी ब्रिज दैट गैप? Also, are we really utilizing the professionals that we have in our country for this purpose? यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, कई लोग यहाँ पर इसमें फोटोग्राफ लिख रहे हैं, people with less hair, no hair, grey hair, ये वो लोग हैं जो पिछले 30, 40, 50 सालों से अपनी कंट्री के अंदर में सही टैलेंट को तैयार कर रहे हैं in a proper formal manner. Now imagine that is what the competition is for us. If we are saying we have to make India number 1, that is the kind of competition we are talking about. Are we geared for it? So yeah, if you look at it, I would like to showcase a model here कि कैसे बाकी देशों के अंदर में ये काम को सिस्टमैटिकली करा जा रहा है, and can we really adopt that model and work towards it? And that is what India is also trying to do. So I would like to throw some light on that. Please have a look at what Germany is doing, because that is one of the best models available across the world. Vocational Education and Training, or VET, in Europe. Spotlight on Germany. VET in Germany is characterized by close cooperation between the state, companies and social partners. It leads to high-quality vocational qualifications and covers both initial and continuing education. VET includes much work-based learning and is largely based on the apprenticeship program dual system, combining the 2 learning venues, companies and vocational schools. About 50% of upper secondary school learners are enrolled in IVET programs, 70% of them in apprenticeship. Almost 30% of new apprentices has a higher education entrance qualification. Most apprenticeships usually last 3 years and cover 324 occupations in various economic sectors. The basic access requirement is a contract between apprentice and company. Enterprises bear the costs of company-based training and pay apprentice remuneration. VET helps shape the transition from school to working life, contributing to low youth unemployment. National standards and training regulations ensure the quality of dual training programs. These are extended and updated with the constantly changing requirements of the labour market. People with vocational qualifications can acquire advanced vocational qualifications, potentially leading to middle and top management positions. In 2020, Bachelor Professional and Master Professional titles were introduced. The 2019 Qualification Opportunities Act introduced a right to CVET funding for all workers affected by structural change or wanting to train for an occupation lacking employees. The 2019 National Skills Strategy reacts to increasing digitalization in the workplace
and the resulting changes to qualifications and job profiles. The goal is to establish a new training culture, with occupational CVET as a lifelong learning activity. For more Hello. How are you? Thank you. So now what if I tell you कि जो भी आपने देखा तो जर्मनी पिछले 60 सालों से कर रहा है, उससे ज़्यादा सालों से कर रहा है, वैसा कुछ इंडिया में भी अवेलेबल है और आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो. You will feel like opportunity missed, right? 8 साल पहले स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था और गवर्नमेंट ने कुछ इसी इंटेंशन के साथ में कि हम हमारे कंट्री के अंदर में स्किल वर्कफोर्स तैयार कर सके एट डिफरेंट लेवल्स so that our industry can grow. The movement started. So clearly, जो स्ट्रैटेजी स्किल डेवलपमेंट की एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड में अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो रही है. साथ ही साथ में इसमें सिटीजन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट तीनों की भागीदारी चाहिए, राइट? तो जैसे कि बार बार कहा जाता है सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा और आई गेस IIID ऑलरेडी ये सब कर ही रहा है क्योंकि सब साथ में मिलकर चल रहे हैं तभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप मिल पा रहे हैं. So what are we and what are we doing as an organization? I would like to share that. So I represent this organization which is called Furniture and Fitting Skill Council of India. It was established in 2015 under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So this ministry is basically working for the growth of industry via skill development movement. And we primarily comprise of interiors, furniture and allied sector. हमारा नाम में furniture ऊपर आता है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीरियर्स में इंक्लूडेड नहीं है, but इंटीरियर इसका पार्ट है. Now what are we doing? We are a 640 members plus strong association across the country. हमारा फोकस एरिया और टारगेट ऑडियंस रहता है इंडस्ट्री पार्टनर्स, लर्नर्स और स्किलिंग पार्टनर्स. We are setting up training programs, training infrastructure, training projects across the country. जैसे CBSE 10th and 12th board का certification provide करती है and that certification holds value across the country. Similar way, we provide certifications at different levels for these different programs, through which a professional can get a certification which is validated across the country. I guess that is also to an extent what IIID is wanting to do, and we would be more than happy to join hands for that purpose and take this movement forward because we believe in a very collaborative model of working. Now, what do we do? What do we build? So, whatever training programs are built are very job role specific. इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक असिस्टेंट ड्राफ्ट पर्सन चाहिए, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेगा वो असिस्टेंट ड्राफ्ट पर्सन का बनेगा. आप उसको जनरली एक ड्राफ्टिंग सिखा के आगे नहीं भेज रहे हैं. अगर आपकी जॉब रोल हायरार्की के अंदर में उसकी जरूरत है तो उसके लिए प्रोग्राम बनेगा. ये प्रोग्राम्स केवल कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कॉलेज में भी चल रहा है. इसको पैकेज करके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स बन रहे हैं और कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स भी हो रही है इसके ऊपर. इस तरह का नेशनल लेवल पे निकला हुआ सर्टिफिकेट जो होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो है वो रिलीज होता है. दैट अ चाइल्ड गेट्स और अ पर्सन हु कंप्लीटेड द कोर्स गेट्स. Over a period of time, FFSC has launched various initiatives to create awareness and to engage the audience. जो मुझे लग रहा है फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी थक गई है because गर्मी भी ज़्यादा है और खाना भी खाया है. So you have only last 5 minutes for me. I'm not going to hold you too long. A small snippet of what our journey has been so far.
Okay. So very briefly on what is our working model, so that those who want to collaborate IIID specifically, we can understand that aspect of it. So we operate in a very hyper-local manner with a hub-and-spoke approach. We are trying to create a community which is powered by technology and create a regional-based skilling solution, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वहीं पर उनको employment opportunities create हो सके, mobilization का issue नहीं रहेगा, उनको कोई mobility का issue नहीं रहेगा, all those challenges will be solved. So we are planning to create skill academies, which are beginner academies, apprenticeship academies, and center of excellence, and thereby provide training, apprenticeship, and job opportunities. I like to take an example here. तो ध्यान से सुनिएगा इस बारे में, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में सबने सुना होगा, राइट? और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई रहा होगा। आपको पता रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के 3 लेवल्स होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप व्हिच इज देयर. If the person doesn't complete that internship, they are not given a chartered accountancy certificate. They cannot apply for the final exam. Now, what we saw in the German model also, there was an apprenticeship part of it. Now, if we embed what students are learning in colleges, what students are learning in schools, with internships and apprenticeship, imagine a program, 3-year program, 6 महीना बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, 6 महीना आप यहाँ पर आके सीख रहा है, फिर 6 महीना वापस कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर 6 महीना आके सीख रहा है, फिर 6 महीना पढ़ रहा है, फिर फाइनली जब वो आपके पास सारा कब जाके उसको डिग्री मिल रही है. बाय दैट टाइम ऑलरेडी उसको आपका वर्किंग कल्चर, इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर, क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ में आने लगेगा. He'll become more employable, more valuable, right? क्योंकि अभी भी जो आता है वो 3 साल का टाइम स्पेंड करने के बाद आता है और हम उसको 1 से 1.5 साल या 2 साल तक कोई वैल्यू नहीं देते हैं. हम उसको आउट ऑफ करा रहे होते हैं, प्रिंट आउट निकाल के आ जाओ, ये फाइल कंप्लीट कर दो, अरे तुमको नहीं पता इसको मत छेड़ो, प्रोजेक्ट बिगड़ जाएगा, राइट? तो वी गिव आउट ऑफ. इमेजिन द काइंड ऑफ टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की टैलेंट का, अपना खुद का. अगर इफ वी इंटीग्रेट दिस प्रोसेस, हाउ बेटर इट वुड बी. Imagine the same thing was done by IT industry 20 years back, and now you see it. आज Infosys, TCS, थर्ड ईयर में कॉलेज में पहुंच जाती है, बाहर जाके प्लेसमेंट कर देती है और बोलती है आप लास्ट 1 साल के अंदर में 6 महीना हमारा प्रोग्राम पढ़ाओ और 6 महीना हमारे पास भेज दो. उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, कॉलेज के लिए प्लेसमेंट हो गया, उनके लिए सही चीज सिखा दी और उनको सही टैलेंट मिल गया. So that's what we're trying to create. And we have a very structured model of how industry can associate, what benefits they can take. I'm not going to go into detail of that. I just want to highlight that all those options are available because we work very closely with industry, learners and skilling partners. Our overall participation of industry in different programs is going up year on year. And as you can see, a lot of people are participating and the awareness is growing. Over 100 companies participated in the Skill Conscious Employer program, whereby they got their existing skill set certified. They also are now starting different programs, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है. We are also associated with big companies like Nursery, Greenfly, and almost 100 other those kind of employers who are there, and we are doing collaboration programs. अभी हमने नया पार्लियामेंट सबने देखा होगा, right? ये नया पार्लियामेंट में जिन लोगों ने काम किया था, ये उनको स्कूल सर्टिफिकेशन वहाँ पर मिला था, उसका फोटो है. एक प्रोग्राम अभी रन किया गया था लास्ट ईयर, हिंदुस्तान की शान, to felicitate the carpenters and contractors across the country. So we were part of that program as well. We also represented India in 3 trades. Woodworking के अंदर में 3 trades होते हैं, cabinet making, joinery and carpentry. So the boys that you see in the front, all 3 boys represented India. They were like the Virat Kohlis of India. We collaborated with exhibition partners to create beautiful structures called Skill Pavilion, wherein we show live, we have live showcase of skilling. We are also signing MOUs with the government organizations, ताकि government के पास में जो infrastructure पड़ा है, जो idle infrastructure है, that can be utilized. Industry can go there, and the right kind of training setup can be created. अभी आप ऐसा एक setup है, जो बैंगलोर में बन रहा है, जो हैदराबाद में बन रहा है, जहाँ पर industry के लोग जो है, जैसे होमैक है, आपने होमैक का नाम सुना होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, they are coming forward to set up those institutes. So when industry comes together, हम right infrastructure बना पाएंगे कम cost के अंदर में, और हम जल्दी grow कर पाएंगे. So with this mission, we are expanding across the country, trying to create regional skill chapters, जहाँ पर सही manpower create हो सके, right skill sets तैयार हो सके, और जो professionals हैं वो value add कर सके उस पूरे के पूरे development process के अंदर में. So this is the last
request, appeal that I would like to make, take one simple step, become a skill conscious employer. क्योंकि अगर आप skill conscious रहेंगे तो बाकी लोग भी skill conscious automatically होंगे. You can influence the overall ecosystem which is around you. So with that, I leave you on this note. The program is on. Hello. Thank you so much, IIID, for having me here and having us here and giving us a platform to speak. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I think he deserves a huge round of applause. I must say, काफी interesting talk, काफी inspiring talk. There are a lot of pointers from this session that we can take back home and reflect. So, we have a small memento for you, and to present the same, I would request Architect Sandeep Joshi to please come on stage and do the honors. Come on, ladies and gentlemen, a huge round of applause. तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है. Come on. Thank you, gentlemen. Thank you so much, Rahul.